We're going to talk about, इसको हम आज end करेंगे. We'll talk about the motion of the parachutist. We'll do some questions as well from P2 and P1, right? Today we'll end this chapter of kinematics, right? So if you talk about the motion of a parachutist, this is a very common problem that you observe. Motion of a parachutist. Okay. So what happens is that if there is a parachute and the person falls, right? पहले तो उसने पैराशूट ओपन नहीं किया होगा, ठीक है, और एक वक्त आएगा वो पैराशूट ओपन करेगा, राइट? तो शुरू में जब वो पर्सन इज गोना फॉल, what's going to happen is that you will have something of this sort. You see, it's going to go like this, like this, like this. Then you see that the person might attain some terminal velocity, right? टर्मिनल वेलोसिटी के बाद क्या होगा कि अब उसको ख्याल आया कि उसने अपना पैराशूट ओपन करना, राइट? सो अ लार्ज डिसेलरेशन will occur, and then again the person will move with constant velocity, that is the terminal velocity, and the person will land on the earth surface, right? So this point here, अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप थोड़ा सा गौर करें, इसको दोबारा बना देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा सा उसको टर्मिनल वेलोसिटी पे आया वो, और उसके बाद उसने ये जो पार्ट है यहाँ पे एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है. दिस इज डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, decreasing acceleration, right? And this point here that you can see is where the acceleration is zero. The terminal velocity has been achieved, right? लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वो बंदा गिर रहा है तो क्या हो रहा है, वेयर रेजिस्टेंस भी एक्ट कर रहा है, and the weight will be equal to the air resistance. The weight is down, right? The air resistance is acting upwards, or drag is acting upward, right? A point will come when the weight will be equal to air resistance. That is when acceleration is zero. This is the point when this person opens the parachute and there is a rapid deceleration. Rapid deceleration, right? This is the point when that person will open the parachute, right? और जब वो दोबारा से जो है वो पैराशूट पूरा पूरा ओपन हो जाएगा तो दोबारा से that person will have hit this point the terminal velocity. So this is what happens. अच्छा, कुछ कुछ जगह पे आपको ये ग्राफ नजर आएगा पैराशूटिस्ट का कुछ इस तरह से, उसमें ये टर्मिनल वेलोसिटी नजर भी नहीं आएगी और वो इस तरह से जाके और जो ही फौरन उसने पैराशूट ओपन किया तो वो गो लाइक दिस, देन it's gonna fall like this. So there is a rapid deceleration again here, right? Let me go it like this. This part is when the parachute opens. This is the speed that we have. This is the time that we have, right? यहाँ पे क्या हो रहा है? This is the terminal velocity that we have. So what is terminal velocity? I've already told you that in terminal velocity, you should know that when an object is moving under the influence of air resistance, and when the air resistance becomes equal to the weight, this air resistance is drag force, right? Becomes equal to the weight of the object. What happens is the object reaches maximum velocity
known as the terminal velocity. ठीक है, तो वो टर्मिनल वेलोसिटी पे जो है वो आ जाए। अच्छा, एक और चीज, अगर एक जो है ऑब्जेक्ट वो ट्रैम्पोलिन पे फॉल कर रहा है, फॉर एग्जांपल पर्सन इज दिस इज अ ट्रैम्पोलिन, और नीचे वाली डायरेक्शन आपने ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको ये आ सकता है इन केस, ये एक दफा मैंने इसका क्वेश्चन देखा और बहुत कम आता है, लेकिन ओ लेवल में ए लेवल में तो बहुत आता है। तो दिस इज द वेलोसिटी। अच्छा, नीचे जा रहा है तो नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव होती है, तो इसकी वेलोसिटी और नेगेटिव होती जाएगी, स्पीड बढ़ रही है लेकिन वेलोसिटी और नेगेटिव हो रही है। फिर जब ये इसको टच करेगा, जब ये ट्रैम्पोलिन को टच करेगा, तो फौरन ही डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, फौरन ही डायरेक्शन चेंज हो गई है, और फिर ये दोबारा से इसकी वेलोसिटी देखिए ऊपर जाके कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती, जीरो पे आ गई। ठीक है, जब यहाँ से ये फॉल किया तो नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव हमने ले ली, ऊपर की डायरेक्शन हमने पॉजिटिव ले ली। तो नीचे जा रहा है तो देखें इसकी वेलोसिटी पहले शुरू में यहाँ पे जीरो थी, फिर -1, -2, -3, -5, ये -5 तक आ गया। यूं ही ये इसको टच हुआ, उसकी डायरेक्शन पलट गई, नाउ द डायरेक्शन इज 5, so it's going up, so 5 4, आहिस्ता आहिस्ता बॉल देखें, बॉल आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन करती है, 3 2 1 0, तो 5 यहाँ पे थी, यहाँ पे -5 थी, and it has reached 0. So this is one thing that you should be aware of. ये बंजी जंपर का भी सिनेरियो इस तरह से आता है। मैं अब आप लोगों को जरा क्वेश्चंस करवाता हूँ P1 और P2 के, राइट? Let's do a couple of questions from different papers, right? So this is the speed time graph for a falling skydiver is shown below. As he falls, the skydiver spreads out his arms and legs and then opens his parachute. At which part shows the skydiver falling with terminal velocity? The answer is D. This is the point where he's falling with terminal velocity. No one else, no point other than D is terminal velocity. Right? The graph shows how the height of an object above the ground changes with time. देखिए इस तरह के सवाल भी आ सकते हैं. What is the terminal velocity here? आपको उन्होंने ग्राफ दिया हुआ है और height above the ground दी, and they're asking you about the terminal velocity. You see that you can take a gradient. The gradient of this distance time graph will give you the speed. It's the displacement here. यहाँ से लेके यहाँ तक gradient constant है. So this point is 3. The coordinates are 1 3, and the coordinates here are 2.5 and 0. So find the gradient. क्या gradient आ रहा है? y2 minus y1 over x2 minus -2 आ रहा है, लेकिन उसका मतलब है डायरेक्शन उसकी 2 बन जाएगा आपके पास, डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है. A steel ball is released just below the surface of a thick oil in a cylinder. During the first few centimeters of travel, what is the acceleration of the ball? एक बॉल सिलेंडर में गिर रहा है और यस उसका वेट तो है, लेकिन उस पर ड्रैग फोर्स भी बढ़ती जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता रिजल्टेंट फोर्स कम होती जा रही है. क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स कम हो रही है तो एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग. रिजल्टेंट फोर्स कम हो रही है, तो by this formula we'll do this in dynamics as well, next chapter as well. आहिस्ता आहिस्ता फोर्स, क्योंकि नीचे वेट है, ये एयर रेजिस्टेंस है, तो एयर रेजिस्टेंस, वो एयर रेजिस्टेंस कह रहा हूँ, ड्रैग फोर्स है लिक्विड में, आहिस्ता आहिस्ता ड्रैग फोर्स बढ़ेगी वेलोसिटी के साथ. 26. द आंसर इज डी. आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा? पहले एक्सेलरेशन 10 थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके पास एक्सेलरेशन कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और एक वक्त आएगा कि विल बिकम 0. कहां पे टर्मिनल वेलोसिटी में? सी. एक्सेलरेट नहीं कर रहा, वेलोसिटी एक्सेलरेशन 0 है,
ठीक है जी, दैट क्लियर? ये टिकट टेप टाइमर मैंने आपको शुरू में बताया था, याद है? और मैंने इसमें बताया था स्टूडेंट pulls a piece of tape through a ticket tape every 0.02 seconds. The timer prints a dot on the tape. First the tape is pulled quickly, then slowly, then quickly again. ठीक है? Which piece of tape does the student obtain? पहले उसने कहा है कि quickly, right? Quickly का मतलब है कि स्पीड उसकी ज्यादा होगी, ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा उतने ही टाइम में, ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा उतने ही टाइम में। फिर उसके बाद द स्पीड इज लेस, कम डिस्टेंस कवर करेगा, टाइम उतना ही है दो डॉट्स के दरमियान। फिर दोबारा क्विकली हो गया, तो बी द आंसर इज बी, मोर डिस्टेंस इन द सेम टाइम, लेस डिस्टेंस इन द सेम टाइम। सो हियर द स्पीड इज मोर, हियर द स्पीड इज लेस, हियर द स्पीड इज मोर अगेन। द आंसर इज बी। Which speed time graph shows an object moving with non-uniform acceleration? C. Yes, A पे constant acceleration है, B पे constant deceleration है, C पे non-uniform acceleration है, it's decreasing acceleration, and D is zero acceleration. Right. How do you find the average speed here? Because total distance is area under the graph, half into base into height, because average speed is total distance over total time, right? So half into base into height over total time. So half, the base is 3, the height is 12, and total time is 3. This will cancel with this one, this will cancel with this one. The answer is 6. Total distance over total time. Right. Okay. Let's move towards P2 question. Yes, P2 question आया है winter 20 में 2021 में। ये एक distance time graph है। Figure 1.1 is the distance time graph for a skydiver who jumps from a balloon at time t is equal to 0. ठीक है, this is a skydiver who's jumping from a balloon, right? ठीक है जी? The first part of the graph shows the motion of the skydiver from when he jumps until he reaches terminal velocity. Describe the motion of the skydiver between t0 and t20 seconds. You have to describe, and how many marks? 2 marks. ठीक है, आपने सिर्फ ये बताना है कि मोशन, आपको उसने फोर्सेस के बारे में नहीं बताया अभी। फोर्सेस, एयर रेजिस्टेंस इज अ फोर्स। आपने सिर्फ बताना है कि शुरू में इट्स एक्सेलरेटिंग, then the acceleration decreases, and then he reaches a constant velocity. ठीक है, he is accelerating. ठीक है, first of all you just say that he is accelerating, the speed is increasing, the speed is increasing at a decreasing rate। देखिए क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता वो constant velocity की तरफ जा रहा है, the speed is increasing। ठीक है, वो acceleration से constant velocity पे जा रहा है, इसका मतलब है acceleration। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ नहीं है। तो ग्रेडियंट से देखिए आप, उसकी स्पीड जो है वो बढ़ तो रही है लेकिन डिक्रीजिंग रेट के साथ, एंड ही रीचेस अ कांस्टेंट स्पीड। दिस इज व्हाट इज गोना हैपन। द कांस्टेंट स्पीड इज गिवन बाय दिस ग्रेडियंट, दिस ग्रेडियंट इज कांस्टेंट। Explain the motion of the skydiver between t0 and t20 seconds in terms of forces acting on him। फोर्सेस का मतलब है वेट है और एयर रेजिस्टेंस है। तो क्या हो रहा है, तो हो क्या रहा है कि शुरू में वेट ज्यादा है एयर रेजिस्टेंस से, वेट शुरू में ज्यादा है एयर रेजिस्टेंस से, आहिस्ता आहिस्ता स्पीड के साथ एयर रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, राइट? सो यू राइट दैट इट एयर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद द स्पीड, increases with the speed, the resultant force decreases since the weight is acting downwards, air resistance is acting upwards, so the resultant force is decreasing, right? The resultant force decreases, it becomes zero eventually,
The object moves with a constant velocity known as the terminal velocity. The object moves with a constant velocity known as terminal velocity. Is that clear? अच्छा, अगले पार्ट में उसने कहा हुआ है कि figure 1.1 to determine the terminal velocity of the skydiver indicates any value used for your calculation. Just the terminal velocity find करें जरा. How will you find the terminal velocity? Is there a way for that by the graph? Yes, we will find gradient. You can take any 2 points which is a straight line. आप ये और आप ये वाले 2 पॉइंट्स ले लें, ठीक है, और आप इसका ग्रेडियंट निकालना, ठीक है. ये 40 है, ये आपके पास, ठीक है. दो से कोई आपने पॉइंट लेने, कोई सेंसिबल किस्म के, राइट. y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 आपका आंसर आ जाएगा. ये आपका विंटर 2020 में आया हुआ है. अच्छा जी, ये क्वेश्चन, ये पेपर जो है वो है मई जून 2020, क्वेश्चन पेपर 22. Figure 1.1 shows a part of a speed time graph for an athlete in a race. This is an athlete, as you can see here. And during the race, the acceleration of the athlete is uniform in the first 2 seconds, right? As you can see here. And they're asking you that state how the graph shows that acceleration is uniform. The gradient is constant. The gradient in the first 2 seconds is constant. The gradient of the speed time graph gives you the acceleration, right? Determine the distance traveled by the athlete in the first 2 seconds. How will you find the distance with the first 2 seconds? Area under the graph निकालेंगे. It's a speed time graph. You will calculate the area under the graph. ये area आप निकाल लेंगे, triangle है ये. Half into base into height. ठीक है? During the rest of the race for 2 to 5.5 seconds, the acceleration of the athlete decreases. ठीक है? Acceleration वगैरह decrease कर रही है 2 से 5.5 seconds में. At 5.5 seconds, the athlete reaches a maximum speed of 12. तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा. कैसा बनेगा? ठीक है, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन. उसके बाद 12 पे वो 8 सेकेंड्स तक उसने कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल किए. 5.5 से लेके 8 तक वो कह रहा है कांस्टेंट स्पीड. तो आप 8 सेकेंड्स तक चले जाएं स्ट्रेट लाइन, ठीक है. From 8 to 11, the athlete decelerates, finishing the race at 10. ठीक है, तो 8 से लेके 10 तक, 8 से 10 पे वो चला जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड. तो आपने ये ग्राफ बनाना, ठीक है. उसके बाद 11 सेकेंड उसने कहा है, उसने कहा है कि फ्रॉम 8 टू 11. अच्छा, 11 सेकेंड्स का है, तो आप इसको 11 तक ले जाओ. 10 पे जाके वो एंड कर देता. इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस, राइट. यहाँ पे 11 पे आ जाए, तो इस तरह से ग्राफ बनेगा. इज दैट क्लियर?